Assalamu alaikum, my dear students of class 8th. Welcome to your lecture of English. This is your teacher Aisha Salim. I hope that every one of you is doing well at home and enjoying your summer holidays at home very well. Students, as you all know that we have started making videos related to your summer holidays homework, so that it will be a great help for you all to do your summer holidays. So in today's video lecture of English, we are going to do first 4 pages of your holidays homework. So let's start from here. On the first page, you can see that there are questions like MCQs, and the question is that you all have to identify parts of speech from the following statements. As in the following statements, you can see that the particular word is written in bracket, so you all have to identify that the word in bracket is which part of speech. Okay students, so you all have to do it, and you can see that number 1 has been done for you. Okay, as an example, so let me do it. Let me do one MCQ from this page. So I hope that it will be helpful for you that how to do this. Okay, so she as well as her sister is engaged, and the options are adverb, adjective, preposition, and conjunction. Students, I hope that you all are familiar with all parts of speech, as you have done it in your previous classes. So what is the which type of part of speech is as well as? कौन सी part of speech है as well as? If you remember, we have done a chapter in class 7. The chapter name was conjunction. It was in grammar unit of understand and communicate, and in that chapter we have read about meaning conjunctions. So conjunction is a word that that is used to join some one sentence or two sentences. Okay, so she as well as her sister is engaged. So as well as is conjunction. वो और उसकी बहन भी दोनों की ही मंगनी हो चुकी है, या दोनों ही engaged हैं. ओके, सो इसी तरीके से आपने बाकी MCQs भी करने हैं. आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है दैट विच part of speech is the particular word written in the brackets. So the next page is also of this exercise. सो ये पेज भी आप लोगों ने इसी तरीके से करना है. ओके, सो आप लोगों को आई होप कि बहुत इजीली आप ये कर सकोगे. Like you also have read about prepositions, adverbs, adjectives, conjunctions. So आप लोगों ने इसको करना है. ठीक है, लाइक यहाँ पर देखें एक सेंटेंस है, द हंटर एम्ड एट द डव. Now at is in the bracket, so we all have to tick mark that which part of speech is at. Is it adverb, is it adjective, preposition और conjunction? So adverb क्या होता है? जो कि किसी verb को qualify करता है. ठीक है, then adjective क्या होता है कि वो किसी noun को qualify कर रहा होता है. ठीक है, and preposition हम लोग use करते हैं जो कि like जिस तरह के words होते हैं in, at, on, of, from. And if you remember, we also have done prepositions from grammar composition in class. And conjunction, I have told you in the previous slide that what is conjunction. So I hope that आप easily इसको कर सकोगे. Okay, moving towards forward, this page is of change the voice. It's really very easy, as it is related in your previous concepts from your previous classes. Okay, चेंज द वॉइस में आप लोगों को पता है कि किस तरीके से करने होते हैं कि दैट द 3 major rules are there. Okay, 3 main rules होते हैं. First of all is that you all have to use the third form of verb, then you all have to interchange the position of subject and object,
then you all have to use by, and the other changes will be according to the tense, पर्टिकुलर टेंस जो भी आपको दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग आपने उसको करना है, ठीक है। बाकी 3 मेन रूल्स तो यही हैं, अंडरस्टूड। सो इसी तरीके से आप लोगों ने करना है। फॉर एग्जांपल हियर इज़ अ सेंटेंस, शी डज़ नॉट लाइक एप्पल, वो सेब पसंद नहीं करती है, ठीक है। अब इसको हमने पैसिव बनाना है, शी डज़ नॉट लाइक एप्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच टेंस इज दिस, इट इज़ प्रेजेंट सिंपल। सो प्रेजेंट सिंपल को अब हम लोगों ने चेंज करना है, तो प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज़ करेंगे, इज़, एम और आर, एंड यू ऑल नो दैट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लोगों ने यूज़ करनी है और इंटरचेंज करनी है पोजिशंस को, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। So the sentence will be like this, that apple is single, so यहाँ पे हम is use करेंगे, apple is not liked by her। Okay students, so I hope कि ये भी आप लोग easily कर सकोगे। It is related to your previous concepts, and the next slide is also related to your previous concept. It is narration, direct and indirect narration. इसमें भी as you all know that there are 3 major rules, 3 major changes. Number 1 is change of pronoun, then change of time and place, then change of tenses. आई होप दैट यू ऑल नो दैट हम लोगों ने किस टेंस को किस तरह से चेंज करना होता है, प्रोनाउंस कैसे चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है तो हम लोगों ने उसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच चेंज करना होगा, सेकंड पर्सन है तो उसको ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, एंड इफ़ देयर विल बी थर्ड पर्सन सो हम लोगों ने उसको चेंज नहीं करना, अंडरस्टूड। सो देन छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जहाँ पर कॉमा आएगा उसकी जगह हमने दैट यूज़ करना होता है। उसके अलावा अगर हमारे पास द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में कॉमास के बाहर वाले पोर्शन में अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है यानी कि पास्ट टेंस है, तब हमने अंदर के टेंस को छेड़ना है, उसको चेंज करना है। उसके अलावा अगर हमारे पास फ्यूचर टेंस है इन रिपोर्टिंग स्पीच में या फिर प्रेजेंट टेंस है तो हम लोगों ने अंदर के टेंस को चेंज नहीं करना और सिर्फ टाइम एंड प्लेस और प्रोनाउन को चेंज करना। Okay students, I hope that the video will be really helpful for you all, and I hope that you can do it easily at your homes. So we'll meet in next video. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz everyone.